Hello everyone, I'm Avinash as I'm currently class 9 the second chapter, Polynomials. So what is a polynomial? A term whose degree is a whole number. मतलब जब किसी टर्म का डिग्री होल नंबर होता है तो उसको हम बोलते हैं polynomial. Like for example, x पावर 8, तो फिर यहाँ पे टर्म है, वेरिएबल है, इसका डिग्री 8 है, दिस इज polynomial. Like c पावर 6, यहाँ भी इसकी डिग्री 6 है, so this is a polynomial. But if I write root x, यहाँ पर रूट x लिखा हुआ है. व्हाट इज रूट? रूट मीन्स हाफ पावर. तो फिर अगर किसी भी जो वेरिएबल का डिग्री फ्रैक्शन में आ जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है. ओके नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अ वेरिएबल? पावर में और वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है? पावर एक कांस्टेंट टर्म का होता है. लाइक फॉर एग्जांपल 2 पावर 8, 3 पावर 6, sin पावर 1, सो ऑन. और जो वेरिएबल है, आई मीन जो आपका डिग्री है, दिस इज बिटवीन पावर एंड डिग्री. जो आपका डिग्री है वो होता है वेरिएबल टर्म्स का. लाइक x पावर 8, y पावर 6, z पावर 5. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if the question comes that what is the degree of root 2, I will say the degree of root 2 is 0 because there is no variable attached to it and the power of root 2 is half. Okay, so what's the degree of root 3? It is 0 and power of root 3 is half. Okay, please note it down. Now उसके बाद the types of polynomial. The types of polynomial on the basis of degree. मतलब डिग्री की बेसिस पे पोलिनोमियल के कितने टाइप्स हमको पढ़ने हैं हम वो करेंगे. फर्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल. अब ये क्या होता है? अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 1 इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल. लाइक फॉर एग्जांपल y प्लस 8, z माइनस 2, x माइनस 6, सो ऑन. इन सबकी डिग्री 1 है, so this is known as linear polynomial. The second is quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Now, what is this? A polynomial whose degree is 2 is known as quadratic polynomial. Like for example, x square, z square, y square 8 plus 8, so on. Okay. Third, cubic polynomial. Polynomial whose degree is 3 is known as cubic पोलिनोमियल. यानी जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल. प्लीज नोट इट डाउन. मूविंग फॉरवर्ड, now second basis, the types of polynomial on the basis of number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर इस पोलिनोमियल के कितने होते हैं टाइप्स. सो फर्स्ट इज मोनोमियल. क्या मतलब? एक टर्म वाला. अ पोलिनोमियल which has only one term is known as monomial. Like for example, z
x y power 8 so on. इन सब में एक टर्म है, so these all are monomials. Second is binomial. इसमें क्या होता है? A polynomial with two terms like z plus 2, x square minus 6 and so on. Okay. Third is trinomial. What's trinomial? जिसमें 3 terms होते हैं. A polynomial which has 3 terms is known as trinomial. Like for example, x square plus y square plus z square a plus b plus c. यानी जिसमें 3 टर्म होंगे हम उसको बोल देंगे ट्राइनोमियल. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन. राइट अ ट्राइनोमियल with degree 60. राइट अ ट्राइनोमियल विथ डिग्री 60. मतलब ये कह रहे हैं कि उसको ट्राइनोमियल चाहिए और उसकी डिग्री 60 होना चाहिए. सो ये एक ट्राइनोमियल है क्या? यस. नॉट डिग्री शुड बी 60. व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द इन द एक्सप्रेशन. सो this is a trinomial with degree 60. Please note it down. उसके बाद आता है कोफिशिएंट्स. कोफिशिएंट्स, अभी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं इसको आप लर्न कर सकते हो एज द वर्ड पार्टनर. ये पार्टनर होता है. ओके, लाइक आई सेड, क्योंकि मेरे पास ये टर्म है -2 x पावर 8. सो व्हाट्स द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8? सो आई एम आस्किंग दैट who is the partner of x power 8? I will say -2. So the coefficient of x power 8 is -2. Now if I write 2 upon 3 y power 6 and I say that what's the coefficient of y power 6 means what's the partner of y power 6? I will say it's 2 by 3. Okay, so what is coefficient? Coefficient means partner of any given expression. Okay, please note it down. Now, then comes a value of a polynomial. Value of a polynomial. All right, what it is? Like I have a polynomial x square minus 3x plus 10. Okay, and I want to find the value of this polynomial at x is equals to -2, x is equals to 1. ठीक है? So पार्ट इज कि मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू -2. मतलब क्या होता है वैल्यू पोलिनोमियल का? कि आपको जो वैल्यू गिवन है आप उस वेरिएबल में जहां जहां आपका वेरिएबल दिख रहा है वहां पुट कर दो. सो व्हाट इज x? x इज -2, सो दिस बिकम्स -2 स्क्वायर -3 into -2 plus 10. Okay, so this becomes 4 plus 6 plus 10. So this is 10 plus 10, 20. So the value of this polynomial at x is equals to -2 is 20. Now the second part is at x is equals to 1. I want to find the value at x is equals to 1. So this becomes P1. This means value of a given polynomial at this data. So it is 1 square minus 3 into 1 plus 10.
So it is 1 minus 3 plus 10. So it is minus 2 plus 10. So 8. So the value of this polynomial at x is equals to 1 is 8. Okay. So let's take some more examples. Now the polynomial is x cube minus 6x square minus 8 minus 6. इसका वैल्यू निकालना है at x is equals to minus 2 and x is equals to minus 3. इन दोनों पॉइंट्स पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. सो द फर्स्ट इज at x is equals to minus 2. So at p minus 2 x is minus 2, I get minus 2 power 3 minus 6 into minus 2 square minus 8 into minus 2 minus 6. Okay, so this is what a cube of minus 2 is minus 8, square of minus 2 is plus 4, minus into minus is plus. Okay, so it is minus 8 minus 24 plus 10, so it is minus 32 plus 10, which is minus 22. So at x is equals to minus 2, the value is minus 22. Okay, now the second part is at x is equals to minus 3. So this becomes p minus 3 equals to minus 3 power 3 minus 6 into minus 3 power 2 minus 8 into minus 3 minus 6. So this becomes a cube of minus 3 minus 27 minus 6 into 9 plus 24 minus 6. Just put it down. So minus 27 minus 54 plus 18. Okay, so we got minus 27 minus 54 plus 18. So it is minus 81 plus 18, which is minus 63. So the value of this polynomial at x is equals to minus 3 is minus 63. So this is how we can find the value of a polynomial at any given data. Okay, note it down and please like and subscribe and share. अच्छा लगे तो. Okay, now next is zero of a polynomial. Zero of a polynomial क्या मतलब होता है इसका? ये x की वो वैल्यू होती है, इट्स अ वैल्यू ऑफ x जो उस पोलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 कर देती है. जीरो ऑफ पोलिनोमियल मीन्स कि a given value of x at which the polynomial itself becomes 0. Okay, so to find it, so let's take a linear polynomial. लीनियर क्योंकि ये हमें क्लास 8 तक पता है क्या होता है. अब लाइक फॉर एग्जांपल मुझे इस पोलिनोमियल का जीरो निकालना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे जीरो होगा. तो सिंस आई नो कि व्हाट इज जीरो, जो इसको ही जीरो कर दे. सो दिस बिकम्स 2x minus 5 equal to 0. So 2x is equals to 5. So the value of x is 5 upon 2. यानी कि
5/2 ऐसा पॉइंट है जहां पे ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। सो लेट्स चेक कि ऐसा होता है क्या 5/2 उसका 0 है। सो इट वॉज px is equals to 2x minus 5. So at x is equals to 2/5, I'm getting as 2 into 2/5 minus 5. So this becomes, this is 5/2. This is 5/2. So this is 5 minus 5, 0. So at x is equals to 5 minus 2, this polynomial is getting to 0. So x is equals to 5/2 is the 0 of this polynomial. Okay, note it down. Now क्वेश्चन है कि आई हैव दिस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2। मुझे बताना है कि इन सब वैल्यू में से इन तीनों वैल्यू में से कौन कौन से इसके 0 हैं और कौन कौन से नहीं है। ओके, सो 0 कौन सा होगा जिसकी वैल्यू डालने पे ये खुद भी 0 हो जाए। हाँ, इसको हम रूट भी बोलते हैं। यू से 0 और यू से रूट, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो पहली वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, सो दिस बिकम्स 1 स्क्वायर माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। नो, 0 नहीं आया ना, मतलब x is equals to 1 is not the 0 of this polynomial. Second part, x equals to root 2, क्या 0 है क्या? Let's check. So p root 2 is equals to root 2 square minus 2, so 2 minus 2, 0. Yes, 0 आ गया. So x is equals to root 2 is the 0 of this polynomial. Okay, similarly the c part is at x is equals to minus 2, so this becomes again 0. So our x is equals to root 2 and x is equals to minus root 2 are zeros of this polynomial. So this is how we check. ठीक है ना, please note it down. Next comes remainder theorem. इसमें क्या होता है, let there be a dividend whose name is fx, ठीक है, and let there be a divisor whose name is dx. So when I divide fx by dx, then I'm gonna get a value which is known as quotient. Okay, so let this be qx, and there will be some value left at the end that is known as remainder. Okay, now इसका पार्ट तो ये होता है कि if divisor is the factor of dividend, if divisor is the factor of dividend, then my remainder will become 0. अगर
जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड का फैक्टर हो जाएगा, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। सो हाउ डू वी फाइंड अ रिमाइंडर? सो लेट बी फैक्टर, हम मानते हैं कि ये कोई मेरा फैक्टर है x+2, ठीक है। x+2 मेरा जो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, x+2 is the factor of the polynomial kx square minus 2x plus 6. Now I want to find the value of k, कि जो वैल्यू ऑफ k जो है क्या हो जाएगा अगर x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। सो अगर वो फैक्टर है तो पहले हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। व्हाट इज फैक्टर? जो रिमाइंडर 0 देता हो। सो x is -2, so on putting the values I get k -2 is equals to k -2 square -2 into -2 plus 6, so k 4 plus 4 plus 6। now since ये फैक्टर है तो उसको रिमाइंडर क्या देना पड़ेगा? 0। so I get 4k plus 10 equal to 0, so I get 4k plus 10 equal to 0, so 4k is equals to -10, so k is equals to -10 upon 4 or -5 upon 2. Okay, you note it down. Now let's take one more question. If x minus 6 is the factor, if x minus 6 is the factor of mx square minus 2x plus 6, then what's the value of m? अगर x माइनस 6 इसका फैक्टर है तो फिर m की वैल्यू इसमें क्या है? सो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप, आपका जो फैक्टर है वहां से अपना रूट निकाल लो। सो x बिकम्स व्हाट? x बिकम्स 6। नो सिंस ये फैक्टर है तो हमको पता है कि वो रिमाइंडर 0 देगा। सो दिस बिकम्स m इंटू 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, so this becomes 36m minus 12 plus 6 equal to 0. So this becomes 36m minus 6 equal to 0. Alright. So 36m equal to 6. M equal to 6.36. So the value of m is 1 upon 6. So this is how we use the factor and remainder theorem to evaluate our values. So this are our part 1. In part 2 we will do, part 2 में करेंगे MTS and factorization of cubic polynomial. Please like it, subscribe it. Thank you so much.